Hello everyone, I am Oli Banerjee, a rising high school sophomore. I have been learning Kathak from my guru, Arpita Roy, since I was 5 years old. Hi everyone, I am Nia Banerjee and I am a rising 7th grader. I have also been learning Kathak since I was 5. Kathak is one of India's 8 classical dance forms, and it's the only one that originates from the northern part of India. The word Kathak comes from the word Katha, meaning story. Like any other dance form, Kathak is the amalgamation of 3 artistic components: music, dance, and drama. It's well known for its intricate footwork, called tatkar, and rapid spins. Kathak originated as a folk dance, traveling from one village to another through storytellers. Soon enough, Pandits were impressed by their sex life and invited them to go perform in temples. The stories told in their performances changed from the mundane to the mythical, such as tales from the Vedas and the Mahabharata. With the invasion of the Mughals, those dancers were invited to come perform in the chorus, and the philosophy and content of their dance changed again. The focus of Kathak changed from spirituality to entertainment. The costumes, jewelry, and instruments changed as Urdu was embraced and polished technique became a priority. When the British invaded India, dancing was prohibited and could only be taught within the secrecy of one's own home. Through this, the concept of gharanas, derived from the word ghar, were born. Gharanas are localized styles of Kathak that evolved through time. There are 3 main gharanas, originating from Jaipur, Lucknow, and Banaras. The warrior-centric culture of Jaipur was reflected in its dance through sharp movements, robust footwork, and spins. The Lucknow Gharana is known for its more delicate, graceful movements, allowing for the development of a romantic style. Due to its location near the banks of the Ganga, the Banaras Gharana focused more on the spirituality aspect of Kathak. In the post-independence era, Kathak gurus were able to establish their schools and pass on the art form through the Guru Shishya Parampara. Kia and I will present the hues of Kathak. Each of our performances carries its own unique color, which we wish to portray through poetry and pure technical pieces, as well as semi-classical or more film-style Kathak. We'll be starting off with a performance based upon a poem by Javed Akhtar. Words have a special way of weaving vivid, lively images in our minds. So, we felt that this poem carried the essence of green, the color of life. नींद के बादलों के पीछे है मुस्कुराता हुआ कोई चेहरा, चेहरे पर बिखरी एक रेशमी लठ, सरसराता हुआ कोई आंचल और 2 आंखें हैरान हैरान सी। नींद के बादलों के पीछे है एक मुलाकात, एक हसी लम्हा, झील का ठहरा ठहरा सा पानी, पेड़ पर चहचहाती एक चिड़िया, घास में खिलते नन्हे नन्हे फूल, खूबसूरत लबों पे नर्म सी बात। एक पल को मुझे देखती शर्माई सी आंखें, आंखों से गुजरता हुआ मुस्कान का साया, शायद मेरी खामोशी ने है कह दिया तुमसे
वो राज जो मैं तुमसे कभी कह नहीं पाया। कल क्या होगा ये मत सोचो, तुम ये देखो इस शाम के दामन में क्या है। मध्यम मध्यम सी रोशनियों में धुन पे मचलते जिस्मों पर हल्की सी दमक, लहराती हुई संदल बाहें, बल खाती हुई रेशम जुल्फें, ये अंग अंग ये झलक झलक, शीशों की खनक, शीशों को छूते नाजुक लब जिनमें शाम की सुर्खी है। हिरनी सी वहशी आंखों में अनजाने से पैगाम बसे, कोई देख के इनको बहके तो इल्जाम किसे। इन लम्हों के प्यालों में जितनी मस्ती है, सारी की सारी तुम पी लो। इस शाम को जी भर के जी लो, कल जो भी होगा देखेंगे। Now, we will be doing a few pure technical pieces depicted by the color white. The color white is associated with purity as well as being the combination of all light on the visible spectrum. A lari contains long, intricate footwork patterns, usually ended with a tehai. Is a footwork pattern that repeats 3 times, and a short dance composition is known as a dukra. Similar to the dukra, in which the last part repeats 3 times, is known as a tora. A parmelu consists of sounds derived from nature, such as the chichi sound of a cricket. A paran is composed of bowls derived from the pakhwaj, a long barrel-shaped drum.
Ekavidya is a rhythmic poem. सखिया सब उमंग भरी गिरिवर की पूजा कर नारी नारी गोरी गोरी राम तबे तबे बिगड़े राम तबे तबे बिगड़े आनंद मनावत इंद्र देव को करत सनन न पुरवाई चलत धड़ धड़ बादल गरज सागर सागर दुंगड़ दुंगड़ नागर दुंगड़ नागर दुंगड़ नागर दुंगड़ तड़ तड़ बिजली चमकत ताता नगित ताता नगित ताता नगित ताता नगित सरसत मुसलाता सखिया सब वही जात कृष्ण चंद्र दो वर्धन नख पे उठाए ले सबज को बचाए ले देव ऋषि आकाश से फूल बरसावत है नारायण नाच गाए कृष्ण को रिझावत है नारी नारी विक्टोरी विक्टोरी जय जय तरी देवता है नारी नारी विक्टोरी विक्टोरी जय जय तरी देवता है नारी नारी विक्टोरी विक्टोरी जय जय तरी देवता है Is a composition in Hindustani classical vocal music in which certain words and syllables based on Persian and Arabic sounds are used to portray the rhythm of Kathak dance. प्रस्तुत है तराना। तना तेरे ना तेरे नदीम तना तना तेरे ना तेरे नदीम तना तेरे ना तेरे Now for a form of Kathak most of you will recognize, semi-classical or film-style Kathak. The songs are generally centered around the themes of romance and separation,
which are both deeply emotional topics. They are often represented by the color red due to their vibrant, resonating feelings. एक तू है, एक जान है, दोनों तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है। एक मैं हूँ, एक ईमान है, दोनों तुझ पे, हाँ तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है। मरोड़ी कलाई मोरी, मरोड़ी कलाई मोरी, हाँ कलाई मोरी, हाँ कलाई, मरोड़ी कलाई मोरी, चूड़ी चटकाई इतराई तो चोरी से गरबा लगाई, हरी चुनरिया जो झटके से छीनी, हरी चुनरिया जो झटके से छीनी, मैं तो रंगी हरी हरी के रंग लाज से गुलाबी गाल मोहे रंग दोला, कानों में जूही के झुमके लगे के, कानों में जूही के झुमके लगे के, बाहों में मोतियां, बाहों में मोतियां पहने, सजे के मोतियां सजे के, सजना का के लिए, सजना का के लिए रे सजना, जगावे सारी रहना। ढाई शाम रोक लई, रोक लई, रोक लई, ढाई शाम रोक लई, औचक मुख चूम लई, मुख चूम लई, मुख चूम लई, सर से मोरी चुनरी गई, गई गई, सर से मोरी चुनरी गई, सरक सरक सरक, सरक सरक सरक, सरक सरक सरक, आहे छेड़ छेड़ मोरी गरबा लगाई, काहे छेड़ छेड़ मोरी गरबा लगाई, काहे
रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। A ghazal is a lyrical poem, usually based on love, that is set to music. This particular ghazal reflects one of the themes mentioned before, separation. This ghazal overflows with blue, signifying the deep ocean of pain. performing a tumri, a devotional piece. This particular tumri depicts the common theme of
the devotional love between Radha and Krishna, and is therefore assigned the color of saffron. चलो हमें दर्शन दो, गाओ सुदर्शन तोरे नैन वृंदावन, चलो हमें दर्शन दो, चलो हमें दर्शन दो। निधि बन के रास रचे तोरे नैना वृंदावन तू दर्शन दो, चलो हमें दर्शन दो। ज्वाला नैन विशाला, नैन विशाला रंगों की ज्वाला, ये कैसा रास दर्शन दो। ब्रिज की महिमा रची इस रज में, ब्रिज की इस रज में, चलो हमें दर्शन दो, चलो हमें दर्शन दो। गाओ सुदर्शन नैन वृंदावन, चलो हमें दर्शन दो, गाओ सुदर्शन नैन वृंदावन, चलो हमें दर्शन दो, गाओ सुदर्शन नैन वृंदावन, चलो हमें दर्शन दो, गाओ सुदर्शन नैन वृंदावन, चलो हमें दर्शन दो। The last piece we will be performing is to the song Uri Teri Aankhon Se. This song contains many Spanish guitar motifs and is a combination of Kathak and flamenco dance. The Spanish dance form flamenco was actually influenced by the footwork aspect of Kathak. This song is filled with references to the dream world as its unique melody swirls and soars around the dancer. This song is an explosion of vivacity and is best represented by a rainbow. See
across the color spectrum and the aspects of Kathak. We'd like to give a special thanks to Arpita Roy, who has nurtured our love for dance, and to Jaya Auntie and Vibers for giving us this opportunity.